Okay. So yesterday's homework, did you went through that topic, that exercise questions? Do you have any doubt in that questions? In any of the questions? Do you have any doubt in any of the questions? Rohini, Gopal or Sanket, do you have doubt in any of the question? Is my voice audible? Hello. No, sir. Okay. Shall we Yes. move to the next topic then? Okay. Axiomatic approach to probability. Axiomatic approach to probability. There is nothing new in that. Already, whatever it is, you have already studied. It's just told in an ordered way. That's all. See, let S be the sample space of a random experiment. Let S be the sample space of a random experiment. Then probability. So आपने जो पढ़ाई किया था last year, probability मतलब probability is number of favorable cases. Probability is probability of an event is equal to number of favorable cases divided by total number of outcomes. Total number of outcomes or number of favorable outcomes. Cases के जगह आप लिख सकते हैं number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. That is a definition of probability. There is no change in that. That itself is a definition of probability. So here थोड़ा सा जैसे आप 11वीं में आ गया, so थोड़ा सा theorematic way बता रहे. The probability is, you can see that the probability is a real valued function whose domain is the power set of S and the range is the interval 0 1. That means probability is a function like I will explain. So function है तो domain होगा, ये होगा domain. Domain मतलब set of all input values. Range होगा, range मतलब set of all output values. So probability is a function. It is defined like a function. Probability is a function. Range is set of all real numbers between 0 and 1. All real numbers. Outcome में आएगा all real numbers between 0 and 1. And domain आएगा power set of yes, S मतलब sample space. Power set of yes. Power set of S मतलब sample space का power set. Power set मतलब क्या है actually? Power set मतलब P of S. उसका मतलब क्या? उसका meaning क्या है? It means that is set of all subsets. Set of all subset of sample space. Set of all subset of sample space. That is known as power set. And that means what it is? Set of all subset. Every subset of sample space is what? Set of all events. We have seen in the last class. Event matlab set of all subset of a sample space. An event is the an event matlab it is a subset of a sample space. So एक sample space का कोई भी सबसेट को हम इवेंट बोलते हैं. दैट मीन्स डोमेन में क्या रहते हैं? इवेंट्स रहते हैं. इवेंट रेंज में क्या रहते हैं? ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1. Why it is only between 0 and 1? We know that probability of an impossible event is 0. Probability of the sure event is 1. And बाकी कोई भी इवेंट है तो probability हमेशा 0 and 1 के बीच में ही रहेगा. That is why your output
Your range is set of all real numbers between 0 and 1, including 0 and 1. 0 and 1 भी include हो रहे. Then, so domain में power set of sample space. Power set मतलब set of all subset. Set of all subset of sample space is nothing but set of all events. So domain में events आएगा, range में real number between 0 and 1 आएगा. That's all. So it is nothing but the same thing. We know all these things. So उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा theorematic, axiomatic way बता दिया. जैसे probability is a real valued function. इससे real valued function इसलिए बोलते हैं कि उसका जो output real numbers आएगा, because it output we are getting numbers between 0 and 1. That is why it is known as real valued function. ठीक है. So in a simple way, they just whatever the thing you have studied, they said in a theoretical way, axiomatic way. That's all. Probability is a function. It's a real valued function whose domain is power set of sample space. Range is a set of all real numbers between 0 and 1. Okay, and conditions are there, like you can see that for any event, probability of an event is either 0 or greater than 0. Probability कभी negative नहीं होते हैं. Probability of sample space, yes, is sample space. Probability of sample space is 1, because sample space मतलब full event, sugar event, it is always 1. Then if E and S are E and F are mutually exclusive events. Mutually exclusive मतलब कल हमने देखा था कोई common point नहीं है. So that probability of E union F, that is E or F, is equal to probability of E plus probability of F. जैसे A union B में number of elements of A union B हमने पढ़ाई किया था, number of elements of A plus number of elements of B if they are disjoint, कोई common point नहीं है तो common point है तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पॉइंट था उतना एलिमेंट हमें सबट्रैक्ट करना था. सो सेम हियर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब वो दोनों इवेंट्स के लिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. तब ई यूनियन एफ मतलब ई और एफ, उसका probability of E plus probability of F. Now probability of phi is 0. उसका आइडिया इधर है, देखो प्रूफ जैसे उन्होंने बताया है कि probability of E union phi, probability of E union phi, and E and phi, E is any event, phi is null set, so कोई common point नहीं होगा. So probability of E union phi is probability of E plus probability of phi. That means probability of E union phi मतलब it is E itself. So probability of E is equal to left side E union phi is E itself. So that is a probability of E, that is equal to right side already probability of E plus probability of phi. So दोनों साइड से probability of E cancel हो जाएगा. You can say probability of phi, probability of null set is equal to 0. And suppose your sample space is W1, W2, W3, etc. Wn, n outcomes are there. Then हर एक outcome का probability, it should always lies between 0 and 1. उसके अंदर जितना भी आउटकम है उसका आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 मिलना चाहिए. एंड फॉर एवरी इवेंट ए, वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब उसके अंदर का आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना. ठीक है. सो फ्रॉम दिस एक्सियोमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी व्हाट इट सेज इज every first condition, every outcome का probability always lies between 0 and 1. एंड जितना भी आउटकम है पूरा का पूरा आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 मिलना चाहिए. एंड फॉर एवरी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका अंदर जितना भी आउटकम्स है आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना. इज इट क्लियर? हेलो सर. या क्लियर है क्या? यस
तो अभी मुझे एक चीज आपको बताना, जैसे वॉइस क्रैक हो रहा है। वॉइस क्रैक हो रहे हैं। यस सर, थोड़ा थोड़ा। ओके, नाउ देखो, जैसे टॉसिंग ए coin 2 times. So, tossing सिंपल एग्जाम्पल बताता है, टॉसिंग ए कॉइन। हमें पता है कि सैम्पल स्पेस आइदर हेड और टेल। सो probability of head 1/2, probability of tail 1/2। अब दोनों ऐड करके देखो, प्रोबेबिलिटी दोनों आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, which is 1/2 plus 1/2, which is equal to 1। Simple case, but I just want to tell you another situation. Tossing 2 coins। So आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ाई किया था इक्वली लाइकली आउटकम्स। याद है इक्वली लाइकली आउटकम्स? इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब ऑल द outcomes are having equal chances of occurring। बट हमेशा ऐसे आने करके कोई गारंटी नहीं। इधर सपोज ऐसे बोल रहे हैं कि getting a head is three times as of getting a tail। So if this is a situation, getting a head is 3 times as of getting a tail, so probability of getting a tail, say it is equal to x, so probability of getting a head is equal to 3x। बट हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/4। सो हियर आप बोल सकते, सो दिस इज probability getting a tail is 1/4, getting a head is 3/4। so इधर आप देख सकते हैं these are not outcomes are not equally likely है तो हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होना चाहिए, टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होना चाहिए। ऐसे कोई रूल नहीं है हमेशा जो आउटकम्स इक्वली लाइकली होना चाहिए करके। सो हियर इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने बताया, आई एम गोइंग टू टॉस 2 coins, बट मेरा कोइन ऐसे है कि कोइन में हेड मिलने का चांस 3 times as ऑफ गेटिंग ए टेल है। दैट मीन्स टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अंडरस्टूड? सो इन दिस पर्टिकुलर केस सैम्पल स्पेस आपको पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अभी हर एक का प्रोबेबिलिटी आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, फर्स्ट में हेड सेकंड में हेड, हेड मिलने का फर्स्ट में हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, सेकंड में भी हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, सो इट इज 9/16। probability of head tail, so 3/4 1/4, which is 3/16। probability of tail head, which is equal to
1 by 4, 3 by 4, which is 3 by 16. Probability getting a tail. You can see that 1 by 4, 1 by 4, which is equal to 1 by 16. देखो, as per our axiom, suppose your sample space is W1, W2, W3, etc. Wn. फर्स्ट कंडीशन यही था, हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी आइदर 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. सो आप इधर देखो, फर्स्ट आउटकम का प्रोबेबिलिटी दैट वाज 9/16. सेकेंड आउटकम का प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/16. थर्ड आउटकम का प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/16. फोर्थ आउटकम का प्रोबेबिलिटी विच इज 1/16. You can see that all the outcomes probability is always between 0 and 1. So that is what that first axiom says. That's true. अभी सभी आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आउटकम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आउटकम प्लस एक्सेट्रा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट आउटकम, इट शुड बी 1. सो हियर आप देखो 9/16, 9/16 plus 9/16, sorry, 3/16, 3/16 plus 3/16 plus 1/16. So which is 16/16. You can see that that is 1. So that's also true. Understood? And then कोई भी event, जैसे I'm going to define one event here in this particular case. Let A be the event that getting at least one head. Okay. So my A will be getting at least one head, मतलब कम से कम एक हेड तो मिलना चाहिए. सो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा एंड टेल हेड आएगा, getting at least one head. अभी if I need the probability of that, मुझे क्या करना है, तीनों का probability ऐड करना है. Probability of head head, that is what the theorem says. Probability of head head plus probability of head tail plus probability of tail head. So which is 9/16 plus 3/16 plus 3/16, which is equal to 15/16. That is the third condition says. So आप पूछ सकते हैं सर, हम अभी तक जो पढ़ाई किया था, probability of an event is number of favorable cases divided by total number of cases. बट अभी आप बोल रहे हैं कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उस इवेंट के अंदर जितना आउटकम है हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐड करना है. सो आपका जो फॉर्मूला, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जैसे आपका फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये काम करेगा when all the outcomes are equally likely. That you should understand. ठीक है. So number of favorable outcome, आपने जो probability is equal to number of favorable outcome divided by total number of outcomes, ऐसे हमने पढ़ाई किया था. But that is possible, or that formula will work when all the outcomes are equally likely. That means all the outcomes are having equal chances of occurring. Understood? So तब हम बोल सकते था, okay,
क्योंकि हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम है तो इट इज सिंपली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. But you should understand that there are situations when all the outcomes are not equally likely. Okay, so in general, to find the probability of an event, एक event का probability चाहिए तो उस event के अंदर जितना भी outcomes है हर एक outcome का probability add करना है. So इधर मैंने एक example आपको बताया tossing two coin. मैंने सिचुएशन ऐसे बना दिया कि आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली. मैंने बोला गेटिंग ए हेड दिस 3 times as ऑफ गेटिंग ए टेल. टेल मिलने का हेड मिलने का चांस 3 times है टेल मिलने का. सो हो सकती हो कॉइन में कॉइन अनफेयर कॉइन है, मे बी एक साइड में थोड़ा ज़्यादा वेट है, मे बी ऐसे कुछ ना कुछ कारण होगा. So we got probability of getting a tail is 1/4, probability of getting a head is 3/4. So देखो they are not equally likely. Equally likely है तो दोनों का probability 1/2 each होना चाहिए था. So now we tossing two coins, we write the sample space head 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 tail tail head tail tail. Equally likely है तो हर outcome का probability 1/4 1/4 1/4 1/4 आना चाहिए था. But they are not equally likely. That is why you can see that it is 9/16 because head head है तो 3/16 into 3/4 into 3/4, that is 9/16. Like that 3/6 9/16 3/16 3/16 1/16. So that is the case. Equally likely है तो हर एक का आउटकम 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे प्रोबेबिलिटी आते था. Now all this probability, but all this probability equally likely है तो नहीं है तो भी जितना भी आउटकम से पूरा का पूरा आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 नहीं मिलेगा. हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी it should be greater than less than between 0 and 1. एंड इवन का प्रोबेबिलिटी मतलब इवन के अंदर इधर इवन के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स 1 2 3 एलिमेंट्स और तीनों एलिमेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऐड किया. अंडरस्टूड. बट if this is the same like equally likely condition, suppose if the same question equally likely condition है तो probability of so your outcomes आएगा the same head head tail tail sorry tail head head tail tail head tail tail head tail tail. If equally likely, all the outcomes are equally likely, so इसका probability होगा 1/4. इसका भी probability होगा 1/4 1/4 1/4 क्योंकि equally likely है ना. So 1/2 into 1/2 1/4 1/2 into 1/2 1/4. So सबका probability 1/4 आएगा. So देखो so हर एक का probability between 0 and 1 पूरा ऐड करेंगे तो 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 which is 4/4 which is 1. अभी जो इधर मैंने बोला जो इवन ये एटलीस्ट 1 हेड, सो 1 एटलीस्ट 1 हेड मतलब प्रोबेबिलिटी आएगा था 3/4. if that case is of equally likely. Okay, so equally likely है तो 3/4 मतलब you can see number of favorable outcomes. कितना favorable outcomes? 1 2 3 3 favorable outcomes divided by total number of outcomes 4. So equally likely है तो आपका फॉर्मूला नॉर्मल आपने 10वीं में जो पढ़ाई किया फॉर्मूला चलेगा. Probability of an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. And majority of the case in 11th also we are ऐसे discuss कर रहे हैं कि equally outcomes के बारे में ही discuss कर रहे हैं. But you should understand that if the outcomes are not equally likely, then the definition is like this. Every outcome का probability 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. एक सैम्पल स्पेस में जितना भी आउटकम्स है वो पूरा आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 मिलना चाहिए. एंड कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए तो उस इवेंट के अंदर जितना आउटकम्स है हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐड करना है. क्लियर? That is the axiomatic definition of probability. Any doubt?
1 second. I'm just going for the exercise questions. Okay, here in this question number 16.3 we are going to do. The question is, which of the following cannot be a valid assignment of probabilities for outcomes of the sample space? एक sample space दिया देखो W1, W2, W3 etc. W7 एक sample space 7 outcomes. तो उसमें से कौन सा है वैलिड असाइनमेंट, कौन सा वैलिड नहीं है? इसमें से देखो, सी दिस फर्स्ट वन वैलिड है क्या नहीं मुझे बताओ. Is it a valid assignment or not? Hello? Is it a valid assignment or not? Your sample space is having 7 outcomes: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7. Okay. Neeraj, are you there? Neeraj Kale. Neeraj Kale, are you there? हेलो. तो ऐसे क्या लॉग इन करके ऐसे चला गया क्या? ओके, जो संकेत संकेत Yes, sir. so tell me that whether it is a valid assignment or not. First one देखो, W1 probability is 0.1, W2 probability is 0.01, W3 probability is 0.05, W4 first one देखो, first one probability is 0.01, 0.2, 0.6. My question is it a valid assignment or not? Yes, sir. Valid. सबसे पहले ये देखना है कि सबका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है क्या. वो तो कंडीशन सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है. Yes, sir. सेकंड हमें देखना है कि पूरा जब प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 मिलते हैं क्या नहीं. Yes, sir. सो 0.1 प्लस पॉइंट ये देखो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.6, सो ऐसे हो गया 0.9 हो गया. देन 0.05 प्लस 0.03 Point zero 0.08 हो गया, zero. प्लस 1 प्लस 1, सो 0.1 हो गया. सो 0.1 सो पूरा आ गया 1 आ गया. So this is valid. Yes, sir. Okay, second one. So you can see that first one, the outcomes are not equally likely because different outcomes are having different probability of occurring. So the outcomes are not equally likely. Okay. Second case, 1 by 7, 1 by Equally 7. likely. So all the outcomes are equally likely. All the outcomes probability is between 0 and 1. When you add all the outcomes, you will get One. 1. So it is also valid. It is correct. That is possible. Now, third one. Is it valid? सभी outcomes का probability is between 0 and 1. That's okay. But sigma P of W सभी probabilities outcome का probability add करेंगे तो क्या आ रहे? Greater than 1 से ज़्यादा हो रहे ना? Yes, sir. 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0.4, that itself हो गया 1. है ना? Yes, It is sir. greater One than say 1. big one. So it is Yes, not sir. valid. Valid. Next one. See this negative. So it is not. Zero say let's say. So not valid. Probability should be probability of every outcome should be between
0 and 0 and 1. So 1. that is not valid. Next one, इधर देखो. 1 से 1 ज्यादा से हो रहा ज़्यादा, है. it's some भी 1 से ज़्यादा हो रहे, but here the last is W7 का probability that itself more than 1. 1 So it is not valid. valid. ठीक है. So by axiomatic definition of probability, what it says is in a sample space, every outcome का probability 0 and 1 के बीच में होना चाहिए. Then उसका sum of the probability should be sum of the outcomes, sum of the probabilities of the outcomes should be 1 होना चाहिए. Now question number 2. A coin is tossed twice. So coin 2 times toss करेंगे तो head head, head tail, tail Tail head, head, tail tail. tail tail. What is the probability of at least one tail? At least one tail, कम से कम एक tail. So क्या क्या हो सकते हैं? 1 by 3. ये वाला आएगा, 3 by 4. ये वाला आएगा, ये 3 by वाला 4. आएगा. So ये equally likely है. उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो equally likely है ना. So Yes, sir. probability of at least Yes, one head. tail. So Tail. it is number of 3 by total outcomes divided by total number of outcomes, 3 by 4. 4. Okay. Yes, sir. Now a die is thrown. So die thrown है तो आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question number 1. What is the probability of a prime number will appear? Prime number मतलब क्या क्या आ सकते हैं? देखो सेट लिखता हूँ. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 5. Probability आएगा, probability कितना आएगा? 3 upon 1 by 6, which 2. is equal to 1 upon 2. A number greater than or equal to 3. A number greater than or equal to 3. So greater than or equal to 1 by 3 3. मतलब 3, 4, 5, 5, 6. 6. So probability आएगा 4 by 4 6, by 6. which 1 is by 2 3. by 3. 2 by 3. Then a number less than or equal to 1. Less than or equal to 1 मतलब only 1. So probability कितना आएगा? 1 by 6. 1 by 6. ये number more than 6. 0. 5 है, so probability 0. A number less than 6. Less than 6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5. Less than 6 बोला, less than or equal to 6 नहीं. Less than 6 only. So probability कितना आएगा? 5 by 6. 5 by 6. Understood? Yes, sir. Then mm, time. जैसे कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज अभी बाकी है, उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ही नहीं. या सो टुमारो विल कंटिन्यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके, टाइम पे आ जाना. सो वी डोंट हैव टाइम टू वेट लाइक 10-15 मिनट्स लाइक दिस. ठीक है. सो टुमारो सभी लोग टाइम पे आ जाना. Yes, sir.